राइट बेटा, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चीज़ें आपको ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए काम की। यू नीड टू कीप समथिंग इन योर माइंड. Corneal dystrophies, is how beautiful it is written that you can say this is slowly progressive. It's non-inflammatory, remember, no such inflammation is there. It is not acquired. जो पीछे हमने डिस्कस किया था ना बेटा, corneal degeneration, that was acquired. This is genetically determined. It is bilateral opacifying disorder. So now you're trying to understand and find the difference between the previous one, that was the corneal degeneration, is now the corneal dystrophies. The difference is in both the cases there is opacification, but what's the difference? The difference is of the previous one, that was the corneal degeneration, that was the what? That was acquired disorder, and this is kind of genetically determined opacifying disorder, right? इनिशियली इट इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, लेकिन बाद में जाके इसकी एक स्टेशनरी स्टेज आ जाती है, ठीक है, और वो तो फिर बहुत पीक पे होती है और वहाँ पे ग्रेजुअल विजन लॉस हो जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज. वन इज द एंटीरियर डिस्ट्रॉफी, इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड, इट इज़ द ऑटोसोमल डोमिनेंट. And different types of the anterior dystrophies. One is the microcystic dystrophy, one is the Rees-Buckler's dystrophy, and one is the Meesman's dystrophy. And the very first is the microcystic dystrophy, involving the epithelial layer and the Bowman's membrane, that are the top two layers of the cornea, considered to be the most common type of the corneal dystrophy, anterior corneal dystrophy, the microcystic dystrophy. How does it appear? If you look into the cornea, if the patient is suffering from the microcystic dystrophy, and if you look into his cornea, how does it appear? There is actually the appearance of, let me tell you, dot or map or fingerprint opacities. तो इसकी पिक्चर है नहीं, मैं ज़रूर दिखाता आपको, लेकिन दिस इज द कॉर्निया. यू कैन सी डॉट लाइक या मैप लाइक ओपेसिटीज़ होती हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट लाइक ओपेसिटीज़ होती हैं. डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन द एपिथेलियम एंड द बॉमन्स मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरीके से. या ओके, नाउ यू नो दैट द अपीयरेंस एज वेल. How does the patient present if he is having microcystic dystrophy, which is autosomal, it is obviously autosomal dominant, and there is the formation of some opacities in the epithelium and the Bowman's layer. So patient comes to you with the severe pain in the eye. In case of corneal degeneration, if you remember, the pain was mild to moderate. It was not severe. If it is severe, it is anterior dystrophy. Watering of the eyes, photophobia, and the blepharospasm, and obviously vision will be affected. What about the Rees-Buckler's dystrophy? It is relatively common corneal dystrophy, ठीक है. It starts in childhood and the corneal surface become very much rough, क्योंकि opacity कुछ इस तरीके से बनती है. So the surface of the cornea become very much rough, decreased corneal sensation, opacities बनती हैं, typical ring like appearance होती है आपके. This is the cornea. Let's suppose this is the cornea. Okay, let me talk about this. This is the cornea, and this is how the opacity appears. This area of the cornea is completely opacified. You understand? This portion is healthy, this portion is healthy, but this portion is opacified. Typical ring-like appearance, okay? And the cornea becomes very much rough, and that's easy. And then comes another type of the anterior dystrophy. That's the Meesman's dystrophy. It is a rare kind of dystrophy. ये adulthood में होती है, not like this which occurs in the childhood. Symptoms are minimal, treatment is usually not required. And at number 4 is the recurrent corneal erosion syndrome. It is also a type of the anterior corneal dystrophy. Anterior corneal dystrophy के बाद comes the stromal dystrophy. That means the dystrophy is not present in the anterior layer. That is, as dystrophy is not present in the epithelium and the Bowman's layer, the dystrophy is present kind of little posteriorly in the stroma. It is also autosomal dominant, लेकिन इसकी एक टाइप होती है macular dystrophy. वो autosomal dominant नहीं होती, बाकी autosomal dominant होती हैं, ठीक है बच्चा. Let's talk about the stromal dystrophies of the cornea. One is the granular dystrophy. जो भी होगा स्ट्रोमा में होगा.
हाइलीन मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा. कैसे अपीयर होता है? लाइक मिल्की वाइट ग्रेन्यूल्स के जैसे अपीयर होता है. जस्ट लुक एट दिस. दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेनुलर dystrophy, the very first type of the stromal dystrophy. You can see milky white granules. ये कहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं? एपिथेलियम इंटैक्ट है. ये स्ट्रोमा के अंदर हाइलिन मटेरियल डिपॉजिट हुआ है. ठीक है बच्चों. सो हाइलिन मटेरियल डिपॉजिटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा अपीयर एज द मिल्की वाइट ग्रेन्यूल्स. ऊपर से एपिथेलियम बिल्कुल इंटैक्ट होती है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉर्निया इज़ बिल्कुल क्लियर बिटवीन द ओपेसिटीज. इफ़ यू सी, if this is the opacity, obviously this entire region is opacified, लेकिन दो डॉट्स के बीच में हेल्दी कॉर्निया ज़रूर मौजूद है. ठीक है बच्चों. डेवलप्स इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द लाइफ एंड विजन रिमेंस गुड अंटिल द 40 ईयर्स ऑफ द लाइफ. यानी कि 1 से 10 साल की उम्र जो होती है फर्स्ट डिकेड, इसमें ये कंडीशन डेवलप होती है, और 40 साल तक अगर ये कंडीशन रहती है तो भी विजन ठीक होता है. उसके बाद ये प्रोग्रेसिवली विजन लॉस होता है. तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द stromal dystrophy, that is the granular dystrophy. So there was the deposition of the hyaline material in the stroma, and it was appearing more like this, that is the milky white like appearance. Another type of the stromal dystrophy is the lattice dystrophy. इसमें corneal stroma में क्या deposit होता है? hyaline material नहीं, amyloid material. ठीक है. And it starts in the early life, and cornea, you know, starts becoming hazy by the age of the 20 years. You understand the difference between the granular dystrophy and the lattice dystrophy. In case of granular dystrophy, there was a deposition of the hyaline material. Here is a deposition of the amyloid material. In case of granular dystrophy, that was appearing in the first decade of the life, and up to 40 years of life, there was no such vision loss. You can see the cornea is becoming hazy by the age of 20 years. जैसे cornea hazy होगी उसका vision effect होगा 20 years के age में. So you can see the white ये criss cross amyloid deposits stroma के अंदर, criss cross amyloid deposits. ठीक है. So yeah बेटा, that's all about the lattice dystrophy. Now comes another type of the stromal dystrophy, that is the macular dystrophy. It is not autosomal dominant. Well, but what happens in this is there is deposition of something in the stroma of the cornea, and what is that something? That is the mucopolysaccharides. बड़ी इल डिफाइंड ओपेसिटीज़ बनती हैं. जैसे कि आप देखो ना, इसमें काफ़ी डिफाइंड ओपेसिटी है. ठीक है. इसमें भी पता चल रहा है इसकी मार्जिन्स जो हैं ओपेसिटी जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, लेकिन इसमें बड़ी इल डिफाइंड ओपेसिटीज़ होती हैं. ओपेसिटीज़ के बीच में जो कॉर्निया होती है बड़ी हेजी सी होती है. कैन यू सी दिस पिक्चर? ये ओपेसिटीज़ है ना, ये ओपेसिटीज़ हैं. ये ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी है. दो ओपेसिटीज़ के बीच में हेल्दी कॉर्निया मौजूद है. ठीक है बच्चों. इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन होती है. इट स्टार्ट्स इन द फर्स्ट डिकेड जस्ट लाइक द ग्रेनुलर डिस्ट्रॉफी. सो विजन इज ग्रेजुअली लॉस्ट इन द अर्ली लाइफ, नॉट लाइक द ग्रेनुलर डिस्ट्रॉफी जो कि 40 साल की उम्र में जाके लॉस होता है आहिस्ता आहिस्ता. But in this case, the vision is lost in the early life, right, beta? So this is all about the anterior dystrophy. We'll now be talking about the posterior dystrophy. So that means the problem will be somewhere behind the stroma, right? So posterior dystrophy, इसकी जो एक ज़बरदस्त टाइप है, इसको हम कहते हैं fush endothelial dystrophy. It is also genetically determined hereditary congenital dystrophy in which there is the involvement of the endothelial cells bilaterally. So it has to be the posterior dystrophy. I want to to focus on this. The interior dystrophy के अंदर दो टाइप्स हमने डिस्कस की. एक टाइप के अंदर सबसे ऊपर वाली लेयर एपिथेलियम इन्वॉल्व हो रही थी और बॉमेंस लेयर इन्वॉल्व हो रही थी. Another type was in which there was involvement of the stroma, right? There was involvement of the stroma. So that was the interior. But in case of posterior, we have to go a little back posteriorly, and endothelium is involved, right? Okay. The first endothelial dystrophy in which the endothelium is involved, it is more common in females with the ratio of 4:1, 4 for female, 1 for male. Onset is gradual, middle age से start होता है, and it may be, look, वैसे तो इसका onset gradual होता है, लेकिन हम कभी जब इंट्राऑकुलर सर्जरी करते हैं ना बेटा, तो इंट्राऑकुलर सर्जरी के बाद पेशेंट को फुश एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी हो सकती है, लेकिन उसका ऑनसेट ग्रेजुअल नहीं होगा, उसका ऑनसेट सडन एक्यूट ऑनसेट होगा. ठीक है.
वैसे तो ये फिश एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिकली डिटरमाइंड हेरिडिटरी कंडीशन है। अगर हेरिडिटरली डेवलप हुई है फिर तो इसका ऑनसेट बड़ा ग्रेजुअल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन आफ्टर सर्जरी डेवलप होती है तो इसका ऑनसेट फिर सडन होता है, एक्यूट होता है, ठीक है बच्चों। पेशेंट कम्स टू यू विद डिक्रीज विजन विच इज़ वर्स इन द मॉर्निंग ड्यू टू कॉर्नियल एडिमा। सीधी सी बात है, सुबह के टाइम पर एडिमा ज़्यादा होता है, जब आप चलते फिरते हो घूमते हो तो एडिमा सेटल होता है, ग्रेविटी की वजह से बैठता है, तो आपका विजन बेहतर होता है। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफी, द फिश एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। One is now at the very first what happens, there is the formation of the guttata in the cornea, छोटे छोटे गटेट बनते हैं। Then you will see there is edema in the cornea, ठीक है, जिसकी वजह से सुबह में तो एडिमा ज़्यादा होता है ना, फ्लूइड आपकी सारी रात आंखें बंद होती हैं तो एडिमा जमा होता है, सुबह उठते हो तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता, और फिर जब 10, 12, 1, 2 दोपहर के बजते तो आपको बेहतरी होती है देखने में, ठीक है। Then occurs the bullous keratopathy, that means there is the formation of the bulla over the cornea, and then finally there is the scarring of the cornea. The possible treatment in case of the posterior dystrophy, yeah, should be the 5% NaCl sodium chloride ointment or solution, ठीक है, which is obviously very much hypertonic. सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, हाइड्रेटेड सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, और क्योंकि एंडोथीलियम डैमेज होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, एंडोथीलियल रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कीमेंट स्ट्रिपलिंग एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी। सो वी आर डन विथ दिस डिजीज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। विल नाउ बी टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट पोर्शन, दैट इज़ द केराटोप्लास्टी, जिसमें हम कॉर्निया की ग्राफ्टिंग देखें ना बेटा। एक कॉर्निया है, नॉर्मल है, हेल्दी है, ये इसकी तरह है, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको रिप्लेस करना, इसकी जगह नई कॉर्निया लगाना, फुल थिकनेस या पार्शियल, तो उसको हम केराटोप्लास्टी कहते हैं। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं।